Assalamu alaikum viewers, welcome to English with Anmol. Today we will cover lesson number 2 of Introduction to Literature. In previous lecture we discussed about definition, types, characteristics and importance of literature. In today's lecture we will be discussing genres and sub-genres of literature. So let's start with the definition of literary genre. A literary genre is a type or a category of literature. Or simply, category of literature is called literary genre. लिटरेचर के कैटेगराइजेशन को कहा जाता है लिटरेरी जेनरा कि लिटरेचर को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है. बेसिकली देयर आर 4 मेजर जेनरास ऑफ लिटरेचर. नंबर 1 ड्रामा, नंबर 2 फिक्शन, नंबर 3 नॉन फिक्शन, नंबर 4 पोएट्री. These genres are further divided into subgenres. Drama has 3 subgenres: comedy, tragedy, tragicomedy. Fiction has 8 subgenres: fantasy, folklore, mystery, romance, thriller, historical fiction, science fiction, realistic fiction. Non-fiction has 5 subgenres: biography, autobiography, narrative, periodicals, reference. Poetry has 3 subgenres: lyric, narrative, dramatic. Now we will discuss these genres and subgenres one by one. Starting from drama. Drama comes from Greek word drain, meaning to do or to act. Drama Greek language के एक word drain से derive किया गया है जिसके मायना है कुछ करना. A play for theatre performed by characters in form of dialogues is called drama. ड्रामा एक ऐसा प्ले है जो कि कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं डायलॉग्स की सूरत में. फर्दर हमारे पास इसके सब जेनरास हैं. कॉमेडी, अ ह्यूमरस और अ फनी ड्रामा विद ए हैप्पी एंडिंग इज कॉल्ड कॉमेडी. कॉमेडी एक ऐसा ड्रामा है जिसकी फनी, ह्यूमरस या फिर हैप्पी एंडिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, Pride and Prejudice by Jane Austen, The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde, The Comedy of Errors by William Shakespeare. इन सब ड्रामास की हैप्पी एंडिंग है तो इसको कहा गया है कॉमेडी. सेकेंडली वी हैव ट्रेजेडी. अ सैड ड्रामा विद अ सैड एंडिंग इज कॉल्ड ट्रेजेडी. ड्रामा का वो टाइप जिसकी सैड एंडिंग होती है उसको कहा जाता है ट्रेजेडी. इसकी एग्जाम्पल्स हैं हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो. एट लास्ट वी हैव ट्रेजिक कॉमेडी. बेसिकली ट्रेजिक कॉमेडी ब्लेंड है ट्रेजेडी और कॉमेडी का, क्योंकि इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं, कॉमेडी के भी और ट्रेजेडी के. किस तरीके से कि कुछ लोगों के लिए वो हैप्पी एंडिंग साबित होती है और कुछ लोगों के लिए वो सैड एंडिंग होती है. वी हैव फ्यू एग्जांपल्स. वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बेकेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर, द केयरटेकर बाय हैरोल्ड पिंटर. नेक्स्ट वी हैव फिक्शन. अ राइटिंग दैट डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन रियल लाइफ इज कॉल्ड फिक्शन. वो राइटिंग्स जिनका हकीकी तौर पे कोई भी वजूद नहीं होता या फिर वो रियल लाइफ में कभी भी ना हुई हो उनको कहा जाता है फिक्शन. फिक्शन इज अ प्रोज इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी और अ नॉवेल. फिक्शन को या तो हम लोग स्टोरी की सूरत में लिखते हैं या फिर नॉवेल की सूरत में लिखते हैं. फर्दर वी हैव इट्स सब जेनरास. फैंटेसी, अ स्टोरी इन अ अनरियलिस्टिक और फैंटेसी वर्ल्ड. These stories are based on magical or imaginary beings and lands. ये वो स्टोरीज हैं जिनके अंदर हम लोग कुछ जानदार और कुछ जगहों का जिक्र करते हैं जो कि हकीकी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती. The example is Harry Potter by J.K. Rowling. Then we have folklore, old cultural stories that may include fairy tales, tall tales, fables, myths and legends. These stories are based on traditional beliefs and customs passed through generation by words of mouth. Folklores वो stories होती हैं जो कि हमारे traditions, beliefs और custom पे based होती हैं.
और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल रापुंज़ल by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. Next we have mystery, a story about crime that puzzles you. For example, Then She Was Gone by Lisa Joel. Next we have romance. These are the love stories. For example, A Perfect Gentleman by Candace Camp. Next we have thriller or suspense. A story that makes readers nervous or excited. ये वो स्टोरीज हैं जो कि रीडर्स को हैरान और परेशान कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल विथ नो पास्ट बाय कैथरीन क्रॉफ्ट. देन वी हैव हिस्टोरिकल फिक्शन, अ फिक्शन स्टोरी बेस्ड ऑन रियल हिस्ट्री. वो स्टोरीज जो कि रियल हिस्ट्री पे बेस की गई हों उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल फिक्शन. फॉर एग्जाम्पल गॉन विद द विंड by Margaret Mitchell. Next we have realistic fiction, a story that seems real but is not real. ये वो स्टोरीज हैं जिनको जो है इस तरीके से लिखा जाता है कि वो रियल लगें जबकि वो रियल नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जैन आयर बाय चार्लोट ब्रॉन्टे. लास्ट वी हैव साइंस फिक्शन, अ स्टोरी इन फ्यूचर विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. वो स्टोरीज जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर एडवांसमेंट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हंगर गेम्स बाय सुजैन कॉलिंस. नेक्स्ट genre is non-fiction. A writing that is real and factual or that actually happened is called non-fiction. वो राइटिंग्स जिनका हकीकी वजूद होता है, वो राइटिंग्स जो आपको फैक्ट्स कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देती हो उनको कहा जाता है नॉन फिक्शन. इन नॉन फिक्शन राइटिंग्स ऑथर्स एम इज टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. नॉन फिक्शन राइटिंग्स में ऑथर फोकस करता है कि वो अपने रीडर्स को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे. नेक्स्ट वी हैव सब जनरस. नंबर 1 बायोग्राफी, अ स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ or an account of someone's life written by someone else. इसमें एक ऑथर किसी भी शख्स के बारे में उसके पर्सनल लाइफ के बारे में लिखता है. फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर हैमिल्टन, रॉन चर्नो. नेक्स्ट वन इज ऑटोबायोग्राफी, अ स्टोरी द ऑथर राइट्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी में ऑथर जो है वो अपनी ही लाइफ स्टोरी लिखता है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखता है. फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड. नंबर 3 नैरेटिव नॉन फिक्शन, अ स्टोरी और नैरेटिव दैट हैपेंड इन रियल लाइफ. वो स्टोरी जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो. फॉर एग्जाम्पल हिडन फिगर्स बाय मार्गोट ली शेटरले. Fourth one is periodicals, writings that are written regularly that includes magazines, newspapers and journals. Periodicals वो writings होती हैं जो कि डेली बेसिस पे लिखी जाती हैं. For example, newspapers, magazines and journals. As we have Dawn newspaper, वो हमारे पास डेली बेसिस पे आती है. Fifth one is reference materials. Books with facts in alphabetical order. It may include dictionary or encyclopedia. वो बुक्स जो कि एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आती हैं. जिस तरह हमारे पास कोई भी डिक्शनरी है तो उसकी जो वर्ड्स का सीरीज़ होगी वो किस में होगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. फॉर एग्जाम्पल मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी. द लास्ट genre is poetry. A writing which expresses ideas, feelings and emotions by use of distinctive style or rhythm is called poetry. पोइट्री में वो राइटिंग्स आ जाती हैं जिसके अंदर आइडियाज़, फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करते हुए. पोइट्री इज अ पोएम विदाउट नोट्स. फर्दर वी हैव इट्स सब जनरस. लिरिक. लिरिक इज अ पोएम अबाउट स्पीकर्स थॉट. लिरिक एक ऐसी पोएम है जिसमें स्पीकर अपने थॉट्स के बारे में बता रहा होता है. इट में इंक्लूड एलिजी. Elegy is a mournful poem.
Ode. Ode is a lyrical poem that addresses particular subject. Sonnet. It's a 14-line poem. And the haiku. Haiku is a Japanese poem of 17 syllables. The example of lyrical poem is Dying by Emily Dickinson. Next one is narrative poetry. A person that tells a story. It may include epic. नैरेटिव पोइट्री में ऑथर जो है वो एक स्टोरी बता रहा होता है पोइट्री की सूरत में. अब एपिक क्या है? एपिक इज अ लॉन्ग पोएम दैट प्रेजेस हेरोइक डीड्स. फॉर एग्जाम्पल बेओवुल्फ. बेओवुल्फ is by an anonymous as the author. Next one is dramatic poetry. Words spoken by a character. Dramatic poetry में character बोल रहा होता है. It may include soliloquy, dialogue and monologue. Let's understand the difference between soliloquy, dialogue and monologue. Monologue. It's a speech by one character to another. इसमें एक बंदा स्पीच दे रहा होता है और ऑडियंस उसको सुन रही होती है या फिर अगला कैरेक्टर उसको सुन रहा होता है. इसको कहा जाता है मोनोलॉग. डायलॉग. कैरेक्टर्स स्पीकिंग टू ईच अदर. इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है डायलॉग. सॉलिलिक्यू. कैरेक्टर्स अलोन रिवील इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स. इसके अंदर कैरेक्टर अपने आप से बात कर रहा होता है, अपने खुद के थॉट्स अपने आप को सुना रहा होता है, उसको कहा जाता है सॉलिलिक्यू. द एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री इज पैराडाइज लॉस्ट by John Milton. So that's for the today's lesson. Thanks for watching. If you really learned something from the lecture, then don't forget to like and comment. Subscribe for more fruitful videos. Thank you.